Hare Krishna. So we continue our study of Srimad Bhagavad Gita. वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमिक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीय तमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, so any thoughts, reflections, or anything to share on second chapter? How did you find the second chapter? कैसा लगा दूसरा अध्याय? मतलब पूरा साइलेंट ही लगा क्या फर्स्ट टू चैप्टर्स में? ये आप लोग संभाव में चले गए, ना बढ़िया लगा ना कुछ खराब लगा. हाँ ठीक है सब कुछ. I think that says everything there is really, that we're all so speechless about chapters 1 and 2. There's just so much to say and it's hard to tell. Yeah. We're all just speechless. Amazing. So like this is second time maybe Anuja Diksha doing, they've done before. We had done our previously as well Bhagavad Gita study, and some of you, surely all of you, have read Bhagavad Gita before and are again kindly giving time, which is very nice. But one thing I always say, like within 24 hours, we should keep some time for ourselves. So what is that some time, or when is that some time? So it's before going to bed. We should not just straight go to bed and drop dead. No, no. So minimum 15 minutes, minimum 30 minutes. Give time to ourselves, and that should time be personal time for some reading or some listening to some kirtan or some listening to some class or japa. Minimum 15, 20, 30 minutes should be given uh, so that we go to bed. Going to sleep is like going in an ignorant mode altogether. No? We are completely unaware of even our identity or anything in sleep. So before we go to sleep, this is how we should prepare ourselves going to sleep. So we read from Bhagavatam, Bhagavad Gita, Krishna book, or listen to some class, or listen to Kirtan, or do some good japa last 30 minutes of the day, and then go to bed. And same for waking up. Those who live in temple, they anyways follow a good discipline and temple life and ashram life. But living in household settings, those who live in their houses and all, so waking up early in the morning, then it should not be like, okay, I'm rushing, I'm already late. Oh, my alarm just kept on running and I was snoozing it. No, set up alarm, wake up by then, or wake up within 5 minutes after the alarm rings. And then not just rush again. So morning time, keep for some 5, 10 minutes, 15 minutes for yourself to read something, to listen something, then go. And then morning time, the first priority should be japa, or the first priority in morning time should be like again either reading, hearing kirtan, और डे टाइम ऑल्सो दिन में भी प्रसाद पाने के बाद थोड़ा टाइम रीडिंग हियरिंग करो. प्रसाद बनाओ, भोगा बनाओ तो कीर्तन चला के बनाओ.
When you're preparing lunch meals, lunch, dinner, breakfast, then put on Kirtan. Listen to Kirtan and prepare meals. Then when you're honoring प्रसादम, जब प्रसाद पाओ तब फिर क्लास चलाओ और क्लास सुनते हुए प्रसाद पाओ या कीर्तन सुनते हुए प्रसाद पाओ. जैसे समय को उपयोग में लेके आए, समय को अपने आप को ढालें ढालें इस हिसाब से, और ऐसे ऐसे करेंगे ना तो दिन में आराम से समय निकलेगा, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे हम और डिसिप्लिन में आएंगे, रेगुलेशन में आएंगे. We'll find more time and more discipline. And many people in this world say, oh, don't have time, don't have time. No, time is there. Everyone is the same 24 hours. It's lack of a bit of motivation or discipline or regulation, and then what we are engaged into, what sort of activities. There are certainly activities in this world which pull us down spiritually, and there are activities in this world which pull us up spiritually. So, Krishna conscious lifestyle, how can we be thoroughly engaged? Those who are in student life, those who are in working life and family household life, तो ठीक है, पूरा समय तो हम इतना एब्जॉर्प्शन में नहीं आ सकते ना. स्कूल भी, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई भी करनी होती है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, और काम वाले काम में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, जहाँ पे भी घर भी संभालना होता है. तो लेकिन ऐसे करके थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, और कुछ विशेष 1-2 घंटा तो पर्सनल टाइम रखें जपा के लिए, और सॉलिड रीडिंग, हियरिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए, इत्यादि लर्निंग के लिए. So study Bhagavad Gita again, chapter 1, chapter 2, go through the classes, and go through the book, again shloka translation purports, make some notes and share your thoughts. Okay, so let us start chapter 3. So chapter 3 is entitled Karma Yoga. Arjuna Uvacha ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. EV translation. Arjuna said, "O Jadana, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare, if you think that intelligence is better than fruitive work?" Purport as well, please. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter, with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended, Buddha Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddha Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned,
questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained karma yoga, or work in Krishna consciousness, in this third chapter. Translation again. Arjuna said, "O Janardana, O Keshava, why do you want to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work?" So, after going to the second chapter, now Arjuna is not confused again here, but he's now wanting to open up, or he's giving Krishna an opportunity to expand further. अर्जुन को तो कोई कंफ्यूजन या में नहीं है वो सच, लेकिन हमारे हित के लिए अब वो भगवान को और अवसर दे रहे हैं कि आप और चीजों को और विस्तार से बताइए और बताइए. And look, given an opportunity to have a dialogue with Krishna, who would want to stop it? Who would want to say, okay, enough, we have spoken enough, we have discussed enough? No. One would want to speak more and more, hear more and more, discuss more and more. And we see Arjuna's mood was pretty much on these lines when he was put under illusion by Krishna. His mood was like, oh, why do I fight? Let me just avoid this fighting and let me go and take shelter in a solitary place. If that is what all is like, bhajan is what I need to do, then what is the need for all this? Then I better go and live in a solitary place and do this thing. So, Krishna, I'm confused now. What do you want me to do? Do you want me to fight or go there? Uh, What does inertia mean? Says in the purport, na? Is it something that is not relevant or something? I'm not overly sure. Anyone else? कोई बताना चाहे inertia का क्या मतलब? हिंदी में देखेंगे, हिंदी में क्या दिया एक बार. बोलो हर्षा. Is it like gravity? Something which जो रेस्ट पे नहीं हो फॉल करे ऊपर. I don't know. ठीक है, एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. हिंदी में. I share my screen. पढ़िए हर्षा आप, ये केवल वही सेंटेंस पढ़ो. ये है आपका कभी कभी करके ना, कभी कभी कृष्णा भावनामृत को कभी कभी कृष्णा भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाले मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है. So inertia is like inactive state, inactive, doing nothing. कुछ नहीं करना. कि भजन क्या है, मतलब नो एक्टिव पार्टिसिपेशन, नो एक्टिव एंगेजमेंट. This is what generally society thinks, that okay, spiritual practice is no active participation. These guys, like in West, sometimes not so much now, but sometimes even now as well, there's a way more lack of knowledge and awareness. पाश्चात्य देशों में क्या, there is a term, EV, you know this, right? Drop out. और भी कोई पता होगा, drop out. So sometimes devotees are considered or told as like dropouts in the society, and some other terms as well. I just heard of this dropout.
तो कि ऐसा समझते हैं कि जो भक्तगण है ना, वो किसी काम के नहीं है। वो जिसको भाई और कुछ नहीं करना ना जीवन में, तो लो पकड़ लो माला और बैठ जाओ, चले जाओ मंदिर, है ना? ये तो कोई भी कर ले माला, इसमें क्या बड़ी बात है? देखो कितना फिर से विरोधाभास या पैराडॉक्स। सामान्य लोगों को ऐसा क्या लगता है, भाई माला करना क्या बड़ी बात है? हाँ, कोई भी कर ले, इसमें क्या है? माला हाथ में पकड़ो, घुमाओ और बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ, क्या दिक्कत है? पढ़ने में क्या है भागवत गीता? ये लो किताब पढ़ी है, खोल लो, पढ़ लो, हो गया। हाँ, लेकिन जब माला करने बैठो ना तब पता चलता है। और और इसके लिए कृपा चाहिए, माला करने के लिए भी कृपा चाहिए। बात तो ठीक है, माला में जोर नहीं है कोई माला करने में। There's no effort actually in chanting the holy names of Krishna. There's no effort because it is a sweet relationship, na? It is a communication. It is like talking with Krishna. It is effortless. Chanting is effortless. Japa is effortless. It doesn't require any austerity. कोई तपस्या नहीं है नाम जप करना। बट क्या करें, हमारा मन इतना फंसा हुआ है ना संसार में, because we are so conditioned, it appears, it becomes like an effort to us, because we have not made ourselves very compatible with the, say, the philosophy of Krishna consciousness, with what the real purpose of japa is. We have not tuned ourselves in, we have not made ourselves compatible to it, so it appears to be a struggle, but otherwise it is not at all a struggle, no. It is a joy of the heart to be able to chant. Is singing an effort for anyone? Singing is a joy of the heart. Japa is also what a call to Krishna, which is a joy of the heart. But many times Krishna consciousness is seen as inertia, or like inactive, motionless. They are of no good. They do not have any active role in society. They are not contributing to the society. ऐसा धारणा है कि, और विशेष करके जब कोई ब्रह्मचारी आश्रम ग्रहण कर लेता है ना, मतलब मंदिर में आश्रम में रहने लगता है, गुरु गौरांग की सेवा में, when one puts on saffron robes and starts living in temple in ashram and serving one spiritual master and Mahaprabhu, the mission, then okay, then it is more seen, okay, he couldn't do anything and all, or he's like complete dropout. बट पता नहीं उनको कि भैया विशेष करके जो ब्रह्मचारी है आश्रम में है और जो भक्त लोग सेवा में जुड़े हुए हैं, दे आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। दे आर ऑनेस्टली रियली द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। रीड है वो सोसाइटी के ना, समाज के एकदम से, क्योंकि पूरा कल्चर जो है उन्हीं पे बहुत कुछ आश्रित है ना, वही तो कल्चर को ला लेके आ रहे हैं। ये चरित्र निर्माण और कहाँ से हो रहा है? शास्त्र तो अपने आप से करेंगे नहीं ना, शास्त्रों को कोई बताना, पढ़ाना, प्रमोट, समझाने वाला भी चाहिए ना। तो वो काम टू अंडरस्टैंड ग्रॉस सब्जेक्ट मैटर्स और टू qualify oneself to learn gross subject matters is fine. That is still okay. That's not a huge task. What the bigger thing is how to control our mind, how to understand the mind, how to understand the mechanisms of the mind, and also how to deal with challenges in life, deal with situations in life, है ना? How to not overthink, how to not be casual as well. ये सारी चीजें, ये जो कला, ये प्रेरणा, इंस्पिरेशन, ये कहाँ से आएगी? साधु साधुगण ये देते हैं, और सहज देते हैं ना, क्योंकि वो भगवान पे आश्रित है और वो भगवत जीवन बिताते हैं हिसाब से, तो वो शांत है, पीसफुल है, आनंदित रहते हैं। तो उनको पता आनंद का खोज कहाँ पे और समस्या कहाँ पे, और कैसे लोगों को आनंदित किया जाए। और वो साधुओं का तप होता है ना, उनका वास्तव तपस्या भी यही है, भगवान का नाम जप करना एकाग्रचित से। Real austerity is how to control the mind and chant the holy names of Krishna with one pointed attention. That is real austerity. Society thinks, oh, what big deal is it? Anyone can
flick his fingers around beads and speak, murmur, chant Hare Krishna. What's the big deal? But the real austerity, because we are in conditioned state, it is an austerity upon us. How to chant with an attentive mind. So Arjuna, he was thinking like, this term scapegoat. What does it mean, scapegoat? हिंदी में क्या बोलते हैं स्केपगोट को? बलि का बकरा बोलते हैं ना, बलि का बकरा. So Arjuna was in a way thinking like scapegoat, or scapegoat maybe may not be, but more of like an excuse that okay. See, this becomes easy now that oh, I'm in some problems. Many actually, oh, let me go to temple and let me leave my house, let me quit my house, and I better live in temple. Then life is easy. I don't have to worry about paying bills. I don't have to worry about contributing. I don't have to worry and all. And easy, what hard is there in living in temple? I can just be in the temple, attend programs, and get fed and all everything. So Arjuna was also thinking on those lines. Oh, why to fight? Why to engage myself in this killing business? Let me take an easy way out. Actually, the path of Krishna consciousness is the easiest way out. But to think like this, that okay, let me take an easy way out and I will just go quit this war. I've got the knowledge now, and I go in forest in the woods and meditate and develop further more knowledge. तो एक अर्जुन एक फिर से अर्जुन तो ऐसा नहीं, लेकिन हम ही सामान्य जीव क्या करते हैं भक्ति के नाम पे, है ना, ये ऐसी भावना लेके आते हैं हम अपने अंदर कि चलो यार छोड़ो, कौन करे ये पढ़ाई लिखाई एग्जाम कारोबार इत्यादि झंझटों को पालना, ताला लगाओ ये सबको और चलो मंदिर ही मजे कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मंदिर में रहने की व्यवस्था हो गई, खाने की व्यवस्था हो गई, बस और क्या चाहिए, जो बोलेंगे कर लेंगे भजन इत्यादि, या छोड़ो ये सब. हाँ, कई बार आता है ना ऐसा विचार, छोड़ो क्या बोलते हैं, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार. कईयों को आता है ना ऐसा विचार, सभी को आता है प्राय, अनेकों को. चलो बात बढ़िया भी है अगर कभी कभी माया देव, और ये ऐसा विचार कब आते हैं जब हम परेशानी में रहते हैं. When we are struggling only, that is when we get this emotion, or we say to ourselves, okay, let me pack everything and move into a temple, let me pack everything and go into the woods. But when we are sailing high, जब हम सातवें आसमान में उड़ रहे होते हैं, तो हमें कोई ध्यान नहीं आता भाई हरिद्वार या वृंदावन जाने का, तब नहीं आता. तब तो बस और कैसे मैं छापूं, और कैसे मजे करूं, और कैसे घूमूं फिरूं, और कैसे वाह वाह लूटूं, है ना. When we are sailing high, then such thoughts do not entertain, do not come in our vision, in our mind. Oh, that let me pack up. No, that time we want to accumulate. That time we want to cash in more and more. So these first 8 shlokas we'll find they are so relatable to society. And see, the sequence is amazing. After second chapter, Arjuna is again proposing this question to Krishna that what do I do? Let us read again once again the translation. Okay, सुशीला माता जी हिंदी में आप अनुवाद पढ़िए केवल. कृष्ण. अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं. सुंदर प्रश्न है ना कि भगवान अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म, है ना, आप मेरे से कर्म करवा रहे हो और वो भी कामना, सकाम मतलब कामना सहित, कामना होते हुए ऐसे, तो अगर आपको लगता है कि भाई बुद्धि ये ध्यान करना, बुद्धि योग भक्ति करना, पूजा पाठ करना इत्यादि यही सबसे बढ़िया है, ये बढ़िया, तो फिर मेरे को क्यों आप आगे बढ़ा रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो युद्ध करने के लिए.
क्या करूं मैं? मूल मूल रूप से अर्जुन कह रहे हैं भाई क्या करूं, मेरे को साफ साफ में बताओ, जी मारूं या फिर जपो जपा करूं, क्या करूं? What do I do? Do I do chanting or do I do killing? Let me know what to do, and in simple words. है ना? Sometimes when we go to devotees as well, ना, we want a answer very clear and simple. प्रभु जी घुमा फिरा के नहीं, प्रभु जी आप स्पष्ट में बता दो मैं क्या करूं, मैं ये करूं या ये करूं, इसका उत्तर क्या प्रभु जी? ये मेरा एक संशय, एक डाउट है, तो आप सही सही से बता दो होता क्या है, शास्त्रों में क्या दिया है? So, like here, Arjuna is trying to ask Krishna in straight words, if you can tell me, what do I do now? Should I fight or not fight? Uh, like I was speaking to one devotee in Corona Bhavan. There's some devotees in Kiev, they say, in Ukraine, in Kiev, still not much bombarding or attacks has happened. But nearby places and there are some other areas, places and all, some villages, some towns where lots of destruction has gone about. And so this devotee was saying that yeah, there was a time in Kiev temple or devotees they were getting almost daily messages. Oh, such and such devotee passed away in war. Why? Because he had to fight. सरकार ने वहां की बोली कि जाओ आप युद्ध करो. सोचो कोई सीए पढ़ा लिखा हो, कोई एमबीए वाला हो, कोई चाय वाला हो, ये हो, सबको पकड़ा दो बंदूक, जाओ युद्ध करो भैया. हाँ, जाओ लड़ो. So some devotees, many devotees, they also had to go to fight the war, and some they actually served Krishna in that war or passed away. So Arjuna is asking Krishna, "What do I do now? Do I fight or do I? If you want me to go to woods या temple, मंदिर जाके घंटी बजाऊं, माला करूं, क्या करूं बताइए आप?" And this is important, na? This is again Arjuna is opening this for us because this is again this is a behavioral world, and gradually now Krishna will bring Arjuna up the yoga ladder. In second chapter, the contents everything Krishna has summarized, but we are so uh, Kalyuga Jiva, na? We are so low in memory, so low in retention, very low in retention. We forget things just like what was said 5 minutes ago. Oh, what did she want me to pass on the message? कभी किसी को बोलो आप, can you pass on this message, हाँ, कि ये संदेश आप उनको दे दोगे क्या मेरे मेरे behalf में? ठीक है, हाँ. So now in 5 minutes I have to meet someone and someone tells me, can you pass this small short message to him? And within 5 minutes, oh, what did he say? Actually, I forgot. So we carry very low retention, low memory and all. So just summary doesn't help us. We need even more. Kali Yuga Jeev means he needs hand holding. He needs proper hand holding. है ना? कलयुगा जी मतलब उसको हाथ पकड़ के सब कुछ. तो ये महाप्रभु की कृपा है. महाप्रभु समझते हैं, जानते हैं कि भैया हमारी कैसी स्थिति है, फक्कड़ से भी फक्कड़. और विडंबना ऐसी कि हम अपने आप को स्वीकारते नहीं है. यही कलयुगा है ना. Our situation is very precarious, but our ego is very sky high. This is the problem. We are living on shaky grounds, but we show as if yes, we are better than you or we are stronger than you. Nothing like us, none like us, and all. This is Kali Yuga. And Krishna becomes fully pleased, or Krishna will be available to us just when we tell him that Krishna, this is beyond us. I'm in a tight spot. Krishna, I acknowledge that I am fallen. हम इतना ही बोले ना भगवान को, भगवान मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बद्ध हूँ. भगवान ये संसार चलाना मेरे बस की नहीं है. ये सब इतने बद अवस्था में इतना कुछ मैंने अपने मिथ्या आचरण व्यवहार अपने दिमाग में लगा रखा है. इससे ऐसे पार कर पाना कठिन है भगवान, मेरे बस का नहीं है. और ये सब लेके कैसे मैं आपका नाम जप करूं, तो आप सहायता करें. Only that is required, that we truly acknowledge, we genuinely
sincerely say that Krishna, this is all beyond me, kindly help. So Arjuna is asking this question so that Krishna can respond how to act in this world, how to work, how to engage, how to act in this world. This is a behavioral world, na? We all have to do something and then furthermore elevate our consciousness. Mm. We don't have to stop doing work, but we have to work in a way that we can attract Krishna's mercy and transform that work into love. Mm. Transform that working attitude into loving devotional service. ओके, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? Any question, thoughts or comments? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. व्यामिश्रेण विव्याख्येन बुद्धियोगं बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमनुपा येन श्रेयोमनु येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम. Diksha, you read. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Please tell me decisively which will be most beneficial for me. Perfect. In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This will all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna, therefore, wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by interior or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all the students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. Translation. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be the most beneficial for me. तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं ना भगवान से कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये करूँ वो करूँ. और बात भी सहज है ना. अब जैसे देखो, अर्जुन की दयनीय स्थिति, जितनी हम अर्जुन की दयनीय स्थिति को समझ पाएंगे, उतना हम अपने आप को, ये भागवत गीता के संदेश को और हम अप्रिशिएट कर पाएंगे. The more we actually realize, the more we see, the more we try to sync our heart with Arjuna's heart, the emotion, the feeling he's going through, the helpless, precarious, difficult, tight position situation he's in. None of us are in that position, no. We all have problems in life, but nothing like Arjuna, nowhere close to his situation. Uh, we all have struggles in life, but not like this. So the more we actually
relate, the more we feel or experience or keep Arjuna's tight position in our mind, the more we will be able to appreciate the message of Bhagavad Gita, the more we will be able to feel the joy, the experience the joy, and fall in love with Bhagavad Gita. तो अर्जुना पूछ रहे हैं ये कि एक सेकंड होल्ड करिएगा. So the more we see how precarious situation is of Arjuna, the more we will be able to appreciate the message of Bhagavad Gita. The more we will be able to see the kindness of Krishna, the love, care, and heart of Krishna, है ना? कई बार हम दूसरों का कैसे समझे कि ये व्यक्ति कितने बढ़िया हैं, सेठ जी कितने अच्छे हैं इत्यादि, कितने दयालु कृपालु हैं ये व्यक्ति, वास्तव में कितने सज्जन हैं. जब हम देखते हैं कि ये दूसरे का, देखो इसका दर्द कितना अच्छे से समझा है इसने, तो जैसा हम समझ पाए कि भगवान ने अर्जुन का दर्द कितना अच्छे से समझा और देखो अल्टीमेट समाधान दिया. एक युद्ध के माध्यम से अर्जुन को हम भगवत प्राप्ति कराई ना. हमें भी क्या करा रहे हैं, छोटा सा हमारा कुछ युद्ध है, छोटा सा, एकदम छोटा सा, उसके माध्यम से भगवत प्राप्ति पूरी की पूरी, है ना. Little bit of inquisitiveness say brings us into Krishna consciousness, some bit of knowledge, some bit of struggle, some bit of anxiety and all. Okay, let me check it out. And through that little bit of struggle, inquisitiveness, knowledge, desire for knowledge and all, the path for the attainment of Golok Vrindavan is open to us. तो अर्जुन यहाँ यही प्रश्न कर रहे हैं भगवान से कि भाई आप बताएं थोड़ा सही से, मैं क्या करूं क्या ना करूं. And sometimes it happens na, Arjuna again was not expecting this response from Krishna. Arjuna was not expecting this sort of response from Krishna, that Arjuna thought, okay, I've said everything, let me see what Krishna says. And likewise us, any sincere soul who reads Bhagavad Gita for first time, second time, or what, in good association, in good sincerity and good sincerity, would find what, oh wow, this knowledge is really transcendental, something divine, sublime, transcendental, out of this world altogether. And I wasn't expecting. I knew Bhagavad Gita is something divine. Bhagavad Gita is something transcendental. Bhagavad Gita is something दिव्य अलौकिक परे गीता का संदेश, हाँ. लेकिन ऐसा अद्भुत, this wonderful, this charming, mysterious, relishing, ऐसा कभी नहीं सोचा. चाहे 10 बार पढ़ लेना तो भगवान की वाणी है ना, हमेशा फ्रेश, नित्य यौवन है ना, एवर फ्रेश, एवर यूथफुल, भगवान की वाणी. तो ये संदेश भी एकदम नया नया, नूतन नूतन, गहरा गहरा, एकदम आनंद, कभी बोरियत होगी नहीं. नाम जप में कभी बोरियत नहीं होती, भागवत गीता के अनुशीलन में, भागवतम के अनुशीलन में नहीं होती है.
but all of a sudden if we are exposed in front of it, and even if we didn't want to, but we are exposed in front of it, so we like, okay, now what do we do? So tell me, what would you want me to do? To fight, or just give up the fight and move on, or and okay, any question or comment? तो देखिए, दूसरा अध्याय अर्जुन ने पूरा प्रश्न उत्तरी के बीच में ना भागवत गीता। पहला अध्याय अर्जुन ने ही कहा, दूसरा अध्याय में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया भगवान को, और फिर सुने, वो बोलने दिया भगवान को पूरा बढ़िया से, और सुनते रहे सुनते रहे। दूसरे अध्याय में कोई प्रश्न नहीं किया उन्होंने। हाँ, थोड़ा ऐसे कि भाई ये 54वां श्लोक में ना, कि जो एक वास्तव में भक्त होता है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट या प्रैक्टिशनर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, उसके कैसे स्वभाव, क्या लक्षण होते हैं उसके, कैसे पता चले कि कोई भक्त है। बट और ऐसे नहीं, अब यहाँ पे फिर से प्रश्न करके अब छोड़ देंगे, फिर कृष्ण बोलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे कहीं प्रश्न करके छोड़ देंगे और कृष्ण बोलेंगे, और ऐसा चलते रहेगा। और फिर जो बोलेंगे ना, उन्हीं पे अर्जुन फिर और प्रश्न भी करेंगे। So shall we see next then? नेक्स्ट हिंदी में पढ़ेगा। सुशीला माता जी, आप पढ़िए संस्कृत, अनुवाद आप तात्पर्य भी पढ़िए। हाँ, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा स्निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, शब्दार्थ अनुवाद, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी ओर अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण ही है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज ये एक बार फिर से पढ़िएगा, दर्शन कौन सा? विहीन, इससे ऊपर वाली। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता है, और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत
स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। अनुवाद श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। So Krishna has said everything actually again in second chapter, na, in the summary form and all. But yeah, Arjuna has asked, so Krishna will reveal further more. He will elaborate and explain further more. In this translation, this Prabhupada mentions this in many of his classes as well, writings and teachings. Religion without philosophy, he says, religion without philosophy is, is sentimentalism. It's sentimentalism or sometimes like very fanatics. And philosophy without religion is dry speculation, is dry just knowledge or dry logic. No, it's just mental speculation. So धर्म है, लेकिन कोई शास्त्र वो दर्शन नहीं है, सिद्धांतिक दर्शन इत्यादि नहीं है, केवल रिलीजन है बट फिलॉसफी नहीं है, तो वो सेंटिमेंटलिज्म या फेनेटिज्म बन जाता है। हाँ भाई हम हिंदू हैं, हम ये हैं वो है बस, है ना। फिलॉसफी तो समझो, भागवत गीता की क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है, क्या गीता का क्या संदेश है। लेकिन बस फिर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि में, हाँ ये सिख है, ये पंजाब, ये वो है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बुद्ध है, ऐसे करके, और हम अपने अपने में कई बार देखिए, अभी ये धर्म क्यों हम करते हैं या ऐसा, कभी कभी ऐसा भाव भी आ जाता है, चलो बाकी भी कर रहे हैं ना, नहीं नहीं हम भी करें। उनके अच्छा उनके यहाँ ऐसे करते हैं, इनमें देखो इनमें ऐसे भागवत कथा कराते हैं, इनमें ऐसे कराते हैं, हम भी अपने में ऐसा कराएंगे, हम भी अपना एक ऐसा चला देते हैं, ऐसा करते हैं। तो देखा देखी में थोड़ी ना और इत्यादि, तो ये कई बार ना कि भाई सेंटिमेंटलिज्म या फेनेटिसिज्म। सेंटिमेंटल क्या, दादी ने बोला, नानी से सुना, हमारे तो ऐसे ही होते आ रहा है जी, प्रथा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है। तो और इसी को हम धर्म मान लेते हैं, इसी को हम समझते हैं, हाँ हम यही धर्म है और हम धार्मिक ही हैं, ऐसा ही होता है। और बस उतना ही, उसी को ही करने में, उससे कुछ धर्म मतलब क्या, हृदय परिवर्तन। हाँ, धर्म मतलब हृदय परिवर्तन। रिलीजन मीन्स क्लेंसिंग ऑफ द हार्ट, that which purifies our heart, that which makes us more sober, more gentle, more compassionate, and frees us from any cheating mentality, any cheating propensity, duplicate cheating propensity. That is what actually religion is. Real religion is that which invokes unconditional, unmotivated love for Krishna. That is real religion. So, religion, but without understanding the philosophy, it becomes sentimentalism or fanaticism. Oh, oh हाँ हम हिंदू हैं, हम ये हैं ना, जैसे वो है ना भाई हम भारतीय हैं, हम ये हैं, that is fanaticism. Oh, I'm a Christian, I'm a this and all, without any philosophy behind it. That is more on a bodily designation. Then another thing is there is some philosophy but no practice. No practice or no expression of heart. No way to communicate, no manner to communicate or express that heart, expression of heart. As in केवल सूक्ष्म स्तर पे, यहाँ केवल dry logic, argument and reasoning. So much of exercise of the brain, so much of exercise of the brain. Or, this logy, that logy, say numerology, this logy, do you know this metaphysics, that metaphysics, when this happens, this, that. So many, and they may pose themselves, they may come and appear to be like big, big scholars.
there's some religious groups, they pose themselves to be elite groups. We are from the elite groups, है ना, इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है हमें, हमें ये पता है, वो पता है, matter, anti-matter, but all that knowledge actually is not genuine also, and just after dry knowledge, dry speculation, तर्क वितर्क में एकदम से, और क्या पूरा उसमें नॉलेज बेस्ड ही एकदम, क्या करो भाई, ज्ञान ज्ञान अर्जित करते रहो, वास्तव में कोई सेवा की भावना नहीं है, और ना भगवान को सेवा प्रसन्न करना, वो तो दूर की बात, वैसा है ही नहीं, तो उससे भी काम नहीं, वो भी क्या है, फिर केवल ड्राई लॉजिक है ना, मेंटल स्पेकुलेशन, फिर बस मन को भगाते रहो, दौड़ाते रहो, आदमी फंस जाता है ज्ञान में, जैसे आदमी फंसा हुआ है ना, धर्म में लेके अधर्म से धर्म में आया थोड़ा बहुत, और धर्म में ही फंस गया पूरा का पूरा। हाँ, नहीं भाई, अब अधर्म मत करो, क्यों, पाप लगेगा, डोंट डू irreligious activities, follow religion, follow some scriptures. Why? Because if you do not follow, you will be punished by the laws of God. Okay, but then we become stuck in the rules, regulations, in following all of that, and just we become stuck, we take ourselves just for that only. And in mental speculation, there's so much of philosophy discussion going on, which is an exercise for the brain, but it does not help cleanse the heart. It does not help soften the heart, purify the heart. It does not at all invoke a sense of crying for Krishna. So, and Krishna consciousness is a like complete package. It is not like there's there's no philosophy. Krishna consciousness is has got good philosophy and good this religious aspect as well. Say, in the sense, if you see, right from the very morning, 4:30 से half 4, there's Mangal Aarti. So singing, chanting, है ना? And what is, one is on the altar and one is like singing. So a person, one who is doing deity worship, जो पुजारी हैं मंदिर में, वो भगवान की सेवा करते हैं अर्च विग्रह की ना, और उसी समय क्या आरती चल रही होती है, तो कई भक्त लोग मिल के आरती गा रहे होते हैं भगवान की, और पुजारी जो है वो भी आरती कर रहे होते हैं भगवान की, तो दैट एक्सप्रेशन ऑफ लव इज गोइंग ऑन. Aarti is what? To offer our expression of love, all of this. And at the same time, singing, chanting is going on. And then later on, japa, and then later on, class, Bhagavatam class, to sit down, listen attentively, take in more Krishna conscious knowledge. So the way the day, the whole process is mapped out and all, it is to, it touches every element of our well-being. Every element, intelligent element, intelligence, our mental side, every element of our well-being. And this is such a reciprocation ना, विशेष करके जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, जो डीटी वर्शिप करते हैं मंदिर में, कितनी देखिए, कितना निकटतम सेवा है वो भगवान की उनके पास, ठाकुर जी को उठाना, सुलाना, है ना, श्रृंगार करना, कितना निकटतम है, किसी के श्रृंगार का सेवा मिले, ये कितनी निकटतम सेवा है. If we get a chance to decorate someone, ornament someone, that is such a personal service. And those who do deity worship, they are doing a very personal service, personal, intimate service. So, and this service is not like, okay, while you are in this realm, you do this. But once you attain Godhead, attain enlightenment, attain nirvana or liberation and all, you don't have to do this. No, that's a very low, poor thinking. What we are doing now is also we are trying to bring ourselves in that absolute consciousness. And once we come in absolute consciousness, then also we chant Hare Krishna, and then also we decorate Krishna. Then also we dress Krishna, we decorate him. We beautify Krishna, who is
Anyways, all beautiful and ever beautiful, but we further beautify him. Okay, any question, thoughts, or comments? ठीक है, let us read next. Let us read this in English now. Huh? This is fourth, right? न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति. Anuja, read translation and purport. आशीष मैं पढ़ूं? हाँ. Not by merely Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. फिर से पढ़िए अनुवाद. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Evie, you read purport. The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa. According Read to this the 2 times. Read this 2 times sentence. without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one at once becomes as good as Narayan. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. Again, On read it the 2 other hand, times. without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. Svalpam api asya dharmasya trayate mahato bayat. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. Arsha, you read translation. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. So अब श्लोक संख्या 4, 5, 6, 7, 8 ना. कितने श्लोकास हुए? 4, 5, 6, 7, 8. How many shlokas are there from 4 to 8? कितने श्लोकास हुए 4 से 8 तक? 5. तो अब अगले 5 श्लोकास 4, 5, 6, 7, 8 भगवान ऐसे गजब की चीजें बताएंगे ना
कि समाज में बहुत मिसकंसेप्शंस, बहुत समाज में ना बहुत गलत धारणा, गलत समझ, तो उनका निवारण करेंगे एकदम बढ़िया से। और देखिए ये अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को भगवान ने समझाया। तो देख लो संसार कितना डेवलप हुआ है। सी, just by reading this Bhagavad Gita and all, we can understand how much actually real advancement, progress, or development has actually taken place in this world. None. These are still pretty much the same old questions, the same old story the society is going through. No development. Hardly any. No development. Huh? Same. Because why? Because we have lost touch with Bhagavad Gita. Because we have stopped studying Bhagavad Gita. Because we have lost listening to sadhus, saintly people, because we have stopped taking association of sadhus. That is the biggest fault. That is the biggest deviation we have made in our life. And whatever this unhealthy lifestyle, unhealthy things, and all, whatever has now come about, is a consequence of that. What to do? Human life, na? A person is human life means any life as such is a life of energy. A person will employ his energy somewhere or the other. Now, if he is not associating with devotees, if he is not associating with saintly people, and if he is not reading scriptures, if he is not chanting the holy names of Krishna, then that energy, that space, that time, he will employ elsewhere. And as a consequence of not associating with devotees, then we go into Maya altogether. And then these are basic questions. अभी जो भगवान बताएंगे अब, not by merely abstaining from work can one achieve perfection, freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. तो ऐसा नहीं है कि भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना? Many Arjun might be thinking, again Arjun personally he is not thinking, but we think like this. Krishna put Arjuna in under illusion. एक तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना? तो ऐसा सोचते ना भाई काम ही नहीं करूं तो कर्म फल भी नहीं लगेगा। हाँ, ये बढ़िया फॉर्मूला है। वन में थिंक, oh why bother with the reactions of work? Well, if you want freedom from reaction, stop working. No work, no reaction. हाँ, one may think like Arjuna was contemplating on that. Oh, this is a, see, we humans now we always like, we are smart in finding a easy way out. uh, and we think that okay, we are tricking Krishna, we are tricking Maya, that we are bluffing Krishna, we are bluffing Maya. Oh, I found an easy way out, huh? So that, or I found a smart way out. Yeah, easy way out or a smart way out. So I can do this like this, and still Krishna won't be saying anything to me, or I can still be clean. Hmm? Just like many, they do not shy away from eating animals. They do not shy away from getting intoxicated and all. And they say all in the name of God. And they consider themselves to be holy, godly people, to be somewhat God lovers, God practitioners. And they boldly say, yes, we are on the path to Godhead, we will attain Godhead. And you, Krishna devotees, will get thing. They show us thumbs down, and for themselves, they show thumbs up. And what are they engaged in? In intoxications or eating animals and so many things. So ऐसा नहीं है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना? We may try to act smart or think smart, like okay, oh we are easy, I don't have to work, so no work, no reaction. But no, Krishna is not promoting that. Bhagavad Gita does not promote that.
Bhagavad Gita, the message of Bhagavad Gita is not छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार. Not like that. And so by giving up and also abruptly taking, it says, nor by renunciation can one attain perfection. Yes, perfection can be attained from renunciation, but not just like abruptly giving up. Oh, eh, eh, we all have heard this concept of philosophy or sour grapes, right? Story of sour grapes. You would know what the story of sour grapes is, right? हर्षा अनुजा दीक्षा, हाँ, ये अंगूर खट्टे हैं, सुना ही होगा ना, ये सभी को पता है. नहीं सुना क्या? सुना है भैया. खट्टे अंगूर ना. So Evie, have you heard of this sour grapes? Short story around Say it again. sour grapes. Sour grapes. Yes. Don't think so. Sorry. Okay. Okay. So say a person, he wants to have grapes. He wants to take grapes, eat grapes and all. But somehow or other, he's not getting an opportunity or he's not able to take into those grapes and eat those grapes. He's not getting to have them. And then after making efforts and trying tricks and all, still he's not managing to get hold of the grapes. So ultimately what he says, oh, I'm not bothered. I don't care. Anyways, the grapes are sour. They're not good. Who wants them? No, I don't want them. So that sort of thing. Sour grapes. खट्टे अंगूर, अंगूर खट्टे हैं ना. हाथ नहीं लगे तो भैया खट्टे हैं अंगूर. चाहिए तो पूरे ही. अब हाथ नहीं लगे, कुछ ना कुछ तो संसार में हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं ना, हम कितने चतुर हैं. और जवाबदेही देना ही चाहते हैं भाई. हाँ, वो क्यों नहीं करी ये पढ़ाई, ओ इसलिए नहीं करी ये पढ़ाई, क्यों नहीं किया ये वो. So nor by renunciation can one attain perfection. Sour grapes as in, okay, that ये खट्टे अंगूर ना भाई चाहिए नहीं हमेशा. तो छोड़ो ये काम और भी छोड़ो, नहीं चाहिए हमेशा ये. हम जा रहे हैं संन्यास लेने, या संन्यास छोड़ देंगे, नहीं भाई नहीं लेना ऐसा संन्यास हमें. Thing is, without purification of the heart, if we take into anything, we will be creating disturbance in society. We will be creating chaos in society without purification of the heart. If we take into anything. हिंदी में देखते हैं इसका एक बार अनुवाद. न तो कर्म से विमुख न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ना. तो कर्म से विमुख ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा कर्म फल मिलते हैं तो भैया कर्म ही करना बंद कर दो. नो, वी कैन नॉट लिव लाइक दैट, वी कैन नॉट वर्क लाइक दैट. That the best way to avoid the reactions of karma, of the law of karma, is stop doing any activity, stop doing any karma. Again, without purification of the heart we cannot do. But yes, when the heart is purified in Krishna consciousness, then whatever we do, it becomes an act of love, not an act of activity, not a karmic activity. It becomes a loving activity. Externally it may appear, oh, she's also doing the same thing, she also goes to grocery shops to buy vegetables, she also cooks, cleans and all. He also does the same thing, jobs, work, family or business. Hmm? Externally may appear the same, na? But the consciousness, the mood is altogether different. So भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है. गजब की बात है ना.
कि भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल मतलब मल से रहित मतलब दोष से रहित, है ना, शुद्ध, शुद्ध। स्वच्छ, निर्मल, है ना. So भौतिकवादी, now in this world we all are materialistic people, right? So in order to purify our hearts, there are some activities, some engagement. Charity should be given, some austerity should be done, some fast, some rules regulations should be followed. All such things to purify our heart. शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती. अनायास मतलब अचानक, abruptly, just like that. Oh, I quit now. Uh, I quit family, I quit society and all, and I go join ashram just like that. It doesn't work. And even ashram doesn't take people also just like that. No, there has to be a gradual advancement. Gradual advancement. So joining ashram, it has to be a call of the heart proper. Yes. And the mood has to be built. The mood has to be built. Mood of service for ultimate lifelong service. Throughout the prayers has to be done accordingly to receive the mercy, receive the mercy. And when the call comes, it is a very clear crystal call for someone to join the ashram and serve. So Krishna is warning here to us that having come across this sublime message of Bhagavad Gita, do not think that okay, now we don't need to engage and all. And this is certainly not a, it is an easy way out. It is the clear, why would Krishna give us a hard way out? No. But the heart has to be applied for in properly so that we can relish Krishna consciousness. We can take then Krishna consciousness as the easy way out, effortless. Just like japa should be effortless. Reading of Bhagavad Gita, this study which we are doing, it should be like an effortless thing. It is actually effortless. Yeah, and this study of Bhagavad Gita is to help us purify our heart, soften our heart, and surely it is purifying our heart. It is softening us. It is cleansing the heart. It will motivate us. It will keep us on the right track. And the right track is on the path to Krishna, on the way to Krishna. Okay, any question or comment? कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? Otherwise we leave it here today. Huh? ठीक है, बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के समय और धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.